1. Testify, verb. गवाही देना, सबूत होना, ईमान से. Give evidence as a witness in a law court. Synonyms: give evidence, bear witness, be a witness, give one's testimony, attest. 2. Confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. Synonyms: conflict, clash, brush, fight, battle, contest, encounter, head-to-head, face-off. 3. Cynicism, noun. नाकचिड़ापन, नाकिद, तानाज़न. An inclination to believe that people are motivated purely by self-interest, skepticism. Synonyms: skepticism, doubt, distrust, mistrust, doubtfulness, suspicion, disbelief, incredulity. 4. Compensate, verb. मुआवजा देना, बदला देना, तलाफी करना. Give someone something, typically money, in recognition of loss, suffering, or injury incurred, recompense. Synonyms: recompense, repay, pay back, reimburse, remunerate, recoup, requite, indemnify. 5. Mimic, verb. मजाक उड़ाने के लिए नकल करना. Imitate someone or their actions or words, especially in order to entertain or ridicule. Synonyms: imitate, copy, impersonate, do an impression of, take off, do an impersonation of. 6. Incessantly, adverb. लगातार, मुतवातिर, दिमाग. Without interruption, constantly. Synonyms: constantly, continually, all the time, non-stop, without stopping, without a break. 7. Listless, adjective. बेतवज्जुही, बेखबर, थकन, थकावट. Of a person or their manner, lacking energy or enthusiasm. Synonyms: lethargic, enervated, lackadaisical, spiritless, unenergetic, lifeless, vigorless. 8. Malfeasance. बदउनवानी, जुर्म, नुकसानदेह रवैया. Wrongful conduct by a public official. Synonyms: misbehavior, misconduct, misdoing, wrongdoing. 9. Coalesce, verb. मुत्तहिद, इकट्ठे लगाना, मिलाना. Come together to form one mass or whole. Synonyms: unite, join together, combine, merge, fuse, mingle, meld, blend, intermingle, knit, together. 10. Treacherous, adjective. नाकाबिल एतबार, गद्दार, बेवफाई. Guilty of or involving betrayal or deception. Synonyms: traitorous, disloyal, perfidious, faithless, unfaithful, duplicitous, false-hearted, deceitful. 11. Catastrophe, noun. आफत, अलमिया, सानिहा. An event causing great and usually sudden damage or suffering, a disaster. Synonyms: disaster, calamity, cataclysm, crisis, holocaust, ruin, ruination, tragedy, blow. 12. Pathetic, adjective. काबिल रहम, काबिल तर्स. Arousing pity, especially through vulnerability or sadness. Synonyms: pitiful, pitiable, piteous, to be pitied, moving, touching, poignant, plaintive. 13. Abundance, noun. बुहतात, ज़्यादा, फरावानी, कसरत. A very large quantity of something. Synonyms: profusion, plentifulness, profuseness, copiousness, amplitude, affluence, lavishness. 14. Exacerbated. मर्ज़ में शिद्दत पैदा करना. To make something that is already bad even worse. Synonyms: heighten, irritate. 15. Accumulate, verb. बढ़ावा, इजाफा, जमा करना. Gather together or acquire an increasing number or quantity of. Synonyms: gather, collect, assemble, amass, stockpile, pile up, heap up, rack up, run up. 16. Devolution, noun. ज़वाल, हवाले करना, तफवीज़. The transfer or delegation of power to a lower level, especially by central government to local or regional administration. Synonyms: decentralization, delegation, dispersal, distribution, transfer, surrender, relinquishment. 17. Wayward, adjective. ज़िद्दी, खुद पसंद,
खुद राय, difficult to control or predict because of willful or perverse behavior. Synonyms: willful, self-willed, headstrong, stubborn, obstinate, obdurate, perverse, contrary. 18. Betrayal, noun. धोखाधड़ी, गद्दारी, The action of betraying one's country, a group, or a person, treachery. Synonyms: disloyalty, treachery, perfidy, perfidiousness, bad faith, faithlessness, falseness, duplicity. 19. Rapprochement, noun. मुफाहमत, मुसालहत, Especially in international affairs, an establishment or resumption of harmonious relations. Synonyms: reconciliation, increased understanding, détente, restoration of harmony, agreement, cooperation. 20. Predatory, adjective. शिकार खेलना, शिकारी, लुटेरा, गारतगिर, Of an animal, preying naturally on others. Synonyms: predaceous, carnivorous, hunting, raptorial, ravening, of prey, raptatorial. The reality of Pakistan, shaped by its wayward masters and bureaucrats, manifests itself each day. Not even December 1971 compares with the listless gloom that engulfs the country today. Ever since the loss of our eastern wing and the judicial murder of our first elected prime minister, our story has degenerated from the tragic to the pathetic to the absurd. Ways out of this desolation exist. But they are barred by the corruption and cynicism of predatory leaders and defenders who accumulate vast fortunes through the criminal abuse of public trust, by the resignation of their prey who are preoccupied with getting through the day, and by the confusion of our intelligentsia and the irresponsibility of our intellectuals. Every major institution and influential group of people has failed the country: the government, the army and intelligence apparatus, the judiciary, parliament, political leaders and parties, the media, the educational and health systems, the civil services, the landed, business and religious elites, etc. Together they have ensured a failed state. The primary culprits are known. They couldn't care less. The Quaid, the Pakistan movement and the people of Pakistan are incessantly mocked. In his last days, the Quaid told the Raja of Mahmudabad, "I am surrounded by traitors." Today, the country is besieged by them. No enemy of Pakistan matches the enmity of its own rulers. They laugh all the way to their foreign banks and talk of national security and economic stability while the ruled sink below the poverty line to wither and die. The time for questions has gone. Only answers matter, which only actions and organized movements can supply. There are social and rights activists, entrepreneurs and professionals who make a difference. They need to coalesce and reinforce each other to generate transforming momentum. The people need servants. A populist panders to a vote bank and sees citizens as subjects. A leader serves citizens. What can be done? Plenty. First, ask yourself what you can do. Then get in touch with someone, anyone, share your thoughts, expand your circle, give your time, discuss, differ, agree, do, and review. Repeat 1,000 times all over the country and see Pakistan change, grow, and succeed. Enemies will begin to melt away. The constitutional/electoral crisis is important but secondary. The primary crisis is domestic governance by malfeasance exacerbated by the threat of climate catastrophe which will mount year by year. Without decent governance, elections will only mimic and insult democracy and existential threats will end our existence. Governance is a function and process of commitment, competence, priorities, reform, resources, feedback, information, devolution, and ownership. Pakistan has all in actual and potential abundance. They have to be mobilized in the face of systemic and treacherous power elite betrayal. They will be mobilized to save our children and grandchildren, and theirs. Pakistan's foreign policy has to contribute to the saving of Pakistan. Principled and realistic policies will contribute to national survival, regeneration, and prosperity.
Peace is a prerequisite. While Kashmir is a matter of principle, it is also a human rights challenge. Pakistan has a responsibility to seek a rapprochement with a very difficult India in order to increase the prospects for justice in Kashmir and to render multifaceted cooperation with India politically feasible. Principled compromise approaches can increase the probability of reciprocity, transform zero-sum confrontation into positive-sum cooperation, reduce security expenditures, and with greater interactions allow less mutually hostile narratives to emerge. There is no reason today why Pakistan should not be willing to negotiate a no-war agreement with India. Reaching a principled understanding on Kashmir could greatly help such an endeavor. Accordingly, playing to the gallery on Kashmir in these circumstances is of no help to the Kashmiris. Afghanistan is another case where the hijacking of foreign policy has led to policy disaster. Pakistan's Afghanistan policy has been a gift to India. Respecting Afghanistan's independence and gaining its confidence is the way towards developing the closest of ties with it and accessing the massive potential for regional cooperation with Central Asia and Iran. Opportunistic policies towards the Taliban do not help. Nor do policies that vary from furtive support to public hostility. What we want for the people of Pakistan must be what we wish and support for the people of Afghanistan. Within this framework, all the issues with Afghanistan can be handled in a mutually satisfactory manner. Pakistan must act with the generosity of a larger neighbor. It is not enough for Pakistan to claim it is following such a policy. Afghanistan should feel this is indeed so. The U.S. has reversed the course of globalization in its effort to preempt the emergence of China as a global rival. Within a deglobalizing world, Pakistan must prioritize its relations within its region, which is Asia. China is in Asia. It is a proven friend of Pakistan. But a failing Pakistan will not be able to realize the potential of the relationship. The ups and downs of CPEC testify to this. In contrast, the U.S. policy towards Pakistan is implicitly premised on Pakistan being a failing state without options, which is just fine for the social and power structure in Pakistan. The importance of the U.S. for Pakistan cannot be gainsaid. But Pakistan needs to change the premise of the relationship. A word about the economy. The Americans, the IMF, and sometimes the Chinese are blamed for Pakistan's economic woes. The IMF may be part of the Washington Consensus. But it does not impose itself on Pakistan. Pakistan goes cap in hand to the IMF. It has its conditions. Pakistan can take them or leave them. However, Pakistan's rulers want IMF cover for not doing the reforms they don't want to do, and for imposing the costs of their dereliction on the people of Pakistan. Those reforms can be implemented independently, which would enable Pakistan to deal with the IMF on better terms. Similarly, the Chinese cannot be blamed or expected to compensate for Pakistan's irresponsible economic governance. The writer is a former ambassador to the US, India and China and head of UN missions in Iraq and Sudan. Published in Dawn, March 2, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान की हकीकत, जिसकी तश्कील इसके आकाओं और ब्यूरोक्रेट्स ने की है, हर रोज जाहिर होती है। यहाँ तक कि दिसंबर 1971 का मुवाजना भी इस बेशुमार मायूसी से नहीं किया जा सकता जो आज मुल्क को घेरे हुए है। जब से हमारे मशरकी विंग की मौत हुई है और हमारे पहले मुंतखब वजीर आजम का अदालती कत्ल हुआ है, हमारी कहानी अलमनाक से अफसोसनाक से मुज़हका खेज तक पहुंच गई है। इस वीरानी से निकलने के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन वो पुरतशद्दुद रहनुमाओं और मुहाफिजों की करप्शन और तज़ब्ज़ुब से महरूम हैं, जो अवामी एतिमाद के मुजरमाना गलत इस्तेमाल के जरिए बेपनाह दौलत जमा करते हैं। उनके शिकार के इस्तीफे से जो दिन भर गुजारने में मसरूफ रहते हैं, और हमारे दानिश्वरों की उलझन और हमारे दानिश्वरों की गैर जिम्मेदारी की वजह से
हर बड़े इदारे और बाअसर गिरोह ने मुल्क को नाकाम बना दिया है। हुकूमत, फौज और इंटेलिजेंस के आलात, अदलिया, पार्लिमान, सियासी रहनुमा और जमाते, मीडिया, तालीमी और सेहत के निज़ाम, सिविल सर्विसेज, जमींदार, कारोबारी और मजहबी अशराफिया वगैरह, उन्होंने मिलकर एक नाकाम रियासत को यकीनी बनाया है। बुनियादी मुजरिमों है का पता चल गया है। वो कम परवाह नहीं कर सकते थे। कायद आज़म, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का मुसलसल मजाक उड़ाया जाता है। अपने आखिरी अयाम में कायद आज़म ने महमूदाबाद के राजा से कहा कि वो मैं गद्दारों से घिरा हुआ हूँ। आज मुल्क उनके घेरे में है। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन अपने ही हुक्मरानों की दुश्मनी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपने गैर मुल्की बैंकों में हंसते हैं और कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, जबकि हुक्मरान गुर्बत की लकीर से नीचे डूब कर मर जाते हैं। सवालात का वक्त गुजर चुका है। सिर्फ जवाबात ही अहमियत रखते हैं, जो सिर्फ इक़दामात और मुनज़्ज़म तहरीकें फराहम कर सकती हैं। समाजी और हुकूक के कारकुन, कारोबारी अफराद और पेशावर अफराद हैं जो फ़र्क पैदा करते हैं। तब्दीली की रफ्तार पैदा करने के लिए उन्हें एक दूसरे को मुत्तहिद करने और मजबूत करने की ज़रूरत है। अवाम को नौकरों की ज़रूरत है। एक पॉपुलिस्ट वोट बैंक की तरफ जाता है और शहरियों को रियाया के तौर पर देखता है। एक लीडर शहरियों की खिदमत करता है। क्या किया जा सकता है? बहुत। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप क्या कर सकते हैं। फिर किसी से भी राबता करें, अपने ख्यालात का इश्तिराक करें, अपने दायरे को वसअत दें, अपना वक्त दें, बहस करें, इख्तिलाफ करें, इत्तेफाक करें और जायजा लें। पूरे मुल्क में 1000 बार दोहराएं और पाकिस्तान को तब्दील होते, तरक्की करते और कामयाब होते हुए देखें। दुश्मन पिघलना शुरू हो जाएंगे। आईनी और इंतखाबी बहरान अहम है, लेकिन सानवी है। बुनियादी बहरान घरेलू गवर्नेंस है, जिसमें आब हुआ की तबाही के खतरे की वजह से इजाफा हुआ है, जो साल बा साल बढ़ता जाएगा। मुहज़्ज़िब हुक्मरानी के बगैर इंतखाबात सिर्फ जमहूरियत की नकल करेंगे और उसकी तौहीन करेंगे, और वजूद की धमकियां हमारे वजूद को ख़त्म कर देंगी। गवर्नेंस अज़्म, अहलियत, तरजीहात, इस्लाहात, वसाइल, फीडबैक, मालूमात, मुंतकली और मलकियत का एक फंक्शन और अमल है। पाकिस्तान में हकीकी और मुमकिना तौर पर बोहतात है। उन्हें मुनज़्ज़म और गद्दार अशराफिया की धोखादही के सामने मुतहर्रिक करना होगा। वो हमारे बच्चों और पोते पोतियों और उनके बच्चों को बचाने के लिए मुतहर्रिक होंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को पाकिस्तान को बचाने में अपना किरदार अदा करना होगा। उसूली और हकीकत पसंदाना पॉलिसियां कौमी बका, अहिया और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेंगी। अमन एक शर्त है। कश्मीर जहां उसूली मामला है, वहीं ये इंसानी हुकूक का चैलेंज भी है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर में इंसाफ के इम्कानात को बढ़ाने और भारत के साथ कसीर अल-जिहती ताउन को सियासी तौर पर काबिल अमल बनाने के लिए एक इंतहाई मुश्किल भारत के साथ मुफाहमत की कोशिश करे। उसूली समझौते के तरीकों से बाहमी ताउन के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। सिफर रकम के तसादुम को मुस्बत मजमूई ताउन में तब्दील किया जा सकता है, सिक्योरिटी अखराजात को कम किया जा सकता है और ज्यादा बाहमी दुश्मनी के बयानिए को उभरने की इजाजत दी जा सकती है। आज कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग न करने के मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयार न हो। कश्मीर पर उसूली तफहीम तक पहुंचने से इस तरह की कोशिशों में बहुत मदद मिल सकती है। लिहाजा इन हालात में कश्मीर पर गैलरी में खेलने से कश्मीरियों को कोई फायदा नहीं होगा। अफगानिस्तान एक और मामला है जहां खारजा पॉलिसी को हाईजैक करने की वजह से पॉलिसी की तबाही हुई है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी भारत के लिए एक तोहफा है। अफगानिस्तान की आज़ादी का एहतराम करना और उसका एतमाद हासिल करना, इसके साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने और वस्ती एशिया और ईरान के साथ इलाकाई ताउन के वसी इम्कानात तक रसाई हासिल करने का रास्ता है। तालिबान के बारे में मौका परस्त पॉलिसियों से कोई फायदा नहीं होता। न ही ऐसी पॉलिसियां हैं जो अवामी हिमायत से लेकर अवामी दुश्मनी तक मुख्तलिफ होती हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के लिए वही चाहते हैं जो हम अफगानिस्तान के अवाम के लिए चाहते हैं और उनकी हिमायत करते हैं।
इस फ्रेमवर्क के तहत अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात बाहमी तौर पर तसल्ली बख्श अंदाज में निपटाए जा सकते हैं। पाकिस्तान को एक बड़े हमसाया की सखावत के साथ काम करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए दावा करना काफी नहीं है कि वो ऐसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। अफगानिस्तान को ये महसूस करना चाहिए कि वाकई ऐसा ही है। अमेरिका ने चीन को आलमी हरीफ के तौर पर उभरने से रोकने की कोशिश में ग्लोबलाइजेशन का रास्ता बदल दिया है। ग्लोबलाइजेशन से पाक दुनिया में पाकिस्तान को अपने खित्ते यानी एशिया में अपने ताल्लुकात को तरजीह देनी चाहिए। चीन एशिया में है, वो पाकिस्तान का साबित शुदा दोस्त है, लेकिन नाकाम होने वाला पाकिस्तान इस ताल्लुकात की सलाहियत का इदराक नहीं कर सकेगा। सीपैक के निशेब व फराज इस बात की गवाही देते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी की बुनियाद वाज़े तौर पर इस बात पर है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है जिसके पास ऑप्शंस नहीं हैं, जो पाकिस्तान ने समाजी और ताकत के ढांचे के लिए ठीक है। पाकिस्तान के लिए अमरीका की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को ताल्लुकात की बुनियाद को तब्दील करने की ज़रूरत है। मईशत के बारे में एक लफ्ज़। अमरीकियों, IMF और बाज़ औकात चीनियों को पाकिस्तान की माशी बदहाली का जिम्मेदार ठहराया जाता है। IMF वाशिंगटन इत्तेफाक राय का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो खुद को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं करता। पाकिस्तान IMF के पास जाता है। इसकी अपनी शराइत हैं। पाकिस्तान उन्हें ले सकता है, छोड़ सकता है। ताहम पाकिस्तान के हुक्मरान IMF से वो इस्लाहात न करने और अपनी गफलत की कीमत पाकिस्तान के अवाम पर डालने के लिए IMF की आड़ चाहते हैं। इन इस्लाहात को आज़ादाना तौर पर नाफिज किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान IMF के साथ बेहतर शराइत पर निमट सकेगा। इसी तरह चीन को पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना माशी गवर्नेंस का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता और न ही इसकी तलाफी की तवक्को की जा सकती है। मजमून निगार अमरीका, भारत और चीन में साबिक सफीर और इराक और सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशनों के सरबराह हैं। अखज़ शदा बतारीख 2 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.